Hello everyone, welcome to the channel. And today in this video we will be talking with the cat toppers, with snap toppers. We have with us Mohak Bansal and Siddid, who will be talking about their journey of the cat and snap examination respectively. आपका कोई भी क्वेश्चन है कैट को लेके, स्नैप को लेके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं. हम अपने जो आज के गेस्ट हैं उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई होप unka strategy, unka tips will be helpful to you guys. We will also be knowing the strategies that worked for them, and they will also share their tough times, and they will also help us understand how they managed to get that high percentile. So first of all, let me welcome boy from Batinda, Mohak Bansal. So Mohak, you cracked Snap 99.22. Congratulations on that, Mohak. Thank you, sir. Thank you so much. So, Mohak, let us start by knowing a brief about your background, from where you did your graduation, and what was your initial days of education, and how come you decided that you want to do MBA? ओके सो सर एमबीए का तो प्लान एक्चुअली मेरा क्लास 8 से था. मतलब आई एक्चुअली हर्ड अबाउट हार्वर्ड एंड ऑल. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूएस एंड Right, एवरीथिंग. right. Uh-huh. तो तब से ही थोड़ा मन में वो फैसिनेशन थी कि एमबीए करनी है. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल सुना था तो तब से था. बट देन फॉर माय स्कूलिंग आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम अ बोर्डिंग स्कूल इन डलहौजी. फ्रॉम 9th Oh. till 12th I was there. फिर Uh-huh. उसके बाद आई डिड बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम मिडवे कॉलेज. आई ग्रेजुएटेड इन 2024 and then after that I joined you for MBA preparation, and then with that I was working as an operations supervisor at Aspire Solutions, which is a based in Bhatinda. Yeah, so this was my second attempt actually. First भी आपके साथ ही Okay. था. उसमें actually I was more focused on work and very मतलब much less focused on the preparation. The first But फिर attempt was trial purpose, and now you nailed it, and nailed it very well, right? So uh, Mohak, you appeared for snap examination, and you cracked it with very good percentile. So may I know what exactly was your success recipe for snap? What made you click the snap examination? सर सक्सेस रेसिपी मतलब फर्स्ट फोकस तो कैट ही होता है, जैसे सबका जी. होता है गेस. तो Right. मेरा भी कैट ही था, बट एग्जाम के बाद पता चल गया था कि इतना जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा नहीं हुआ. बट जो कैट से फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है स्नैप के लिए, कि आपका 80 to 85% ऑफ प्रेप जो आप कैट के लिए करते हो वो स्नैप कवर, Same होता कैट का सिलेबस कवर कर लेता है स्नैप. तो उससे क्या होता है, बेस बहुत स्ट्रांग बन जाता है. एंड स्नैप है. में Right. ऑल यू नीड इज एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट. Right, 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 या right. सो जो So, मेरी कैट की प्रिपरेशन थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया. so we have with us Siddid Khanna also. So Siddid scored 99.79 in CAT, and he scored 99.2 in ZAT, along with the 100 percentile in verbal. So Siddid, welcome to this channel, and welcome to this particular session where we are talking about the talk with toppers, and strategies that helped you scaling as high as 99 percentile. So, Sidit, can you just tell about your basic schooling and from where you are, and about your graduation as well? So I completed my schooling at an international school in Gurgaon. So after that, I pursued computer science at NTU Singapore, and after graduation, I've been working at BlackRock for the last 2 years, almost 2 years now, and I Right. prepared for CAT while working at BlackRock only. So first question to you, Sidid, like you, when you prepared for CAT, you were working. So how difficult is it to manage your time with preparation? Because when you work with a good MNC, so there is a lot of pressure. There are a lot of deadlines you have to meet, right? And at the same time, you are, I think, repeating CAT this year. So you had a pressure of to perform better than last year, isn't it? So how do you Yes. manage these two things? So I prepared a little last year. So I prepared for 2 months last year. I scored around 98.3 last year. Mhm. So following that, I knew I had a lot of work pressure as well this year because I was starting my second year at my job.
So the important thing was I started earlier. So I Yeah. started in end of March, started preparing for CAT because I knew I required a very high score for top colleges. Mhm. So I started in end of March, and I think the important thing was I put in 2 to 3 hours every day. So I didn't study for very long. So Mhm. if I had some work in office, I would usually come back and study for 2 to 3 hours. Kabhi kabhi when I used to be late in office, I used to study for 2 hours in the morning. जी. So doing that for 6 7 months, I managed to finish most of the syllabus in within 3 to 4 months. And after that, it was just mocks, and I gave a mock every weekend, and maybe even two mocks towards the end on every weekend. And weekdays, I would just analyze and repeat the questions that I had made an error on. Good, good, good. So, guys, those who are really pressed on time, those who don't have that much time, those who are working, so it's very important for you to start early, right? So, once you start early, even if you fumble in between, even if you are not going great for 1 or 2 weeks, it's okay. But when you start a bit late, especially those who are repeating, देखो यार मेरा ना एक्सपीरियंस रहा है, मैं इतने साल से कैट कोच कर रहा हूँ. जो लोग रिपीट करते हैं वो ना मोशन में आते आते उनकी जुलाई आ जाती है. जुलाई तक तो उनको लगता रहता है कोई बात नहीं, खींच लूंगा, 95 तो आ गया था, मैं कर लूंगा. सो दे आर अगेन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स. सो इफ यू गाइज आर रिपीटिंग कैट, माई एडवाइस वुड बी स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, right? Don't give too much of time at the beginning, not necessarily, but at least you give 2 to 3 hours every day. To start early is very important. Now, Mohak, the next question comes to you, boy. Which was your strongest section, Mohak, and which was the like so okay section? So my strongest section was quants. वो मुझे पता था मैं कर लूँगा. And my weakest was VARC. Reading, I used to dread reading, and I was very Right. slow at it. Were you able to really improve with preparation in your reading, or you were at the same place after or before preparation, or what strategies you applied to improve your verbal? Okay. So, sir, reading to much, I would say I improved a lot. It took time. I mean, it was very slow and a bit frustrating also because slow incremental improvement थी. ऐसा नहीं था कि एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया. And उसमें सर आपकी बहुत, I mean, you helped a lot with the everyday newspaper exercise and the books you suggested. So उससे बहुत help हुई. That was, I think, the main thing. And the newspaper exercise was the most important thing because it was like a to-do list for every day. तो और Right. कुछ करो ना करो वो तो करना ही है, वो पता है. So that was the thing, I feel. Right. So my piece of advice, 2 cents of my advice is, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हो यार. मेरा फेवरेट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज आता है. तो ये एडिटोरियल पेज जो है, इसकी मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगा कि कैसे करना है. और ये एंड टू एंड करना होता है बेटा. एंड टू एंड मतलब आप समझो कि शुरू से लेके एंड तक आपको ये न्यूज़पेपर करना है, यहाँ से शुरू होके, राइट, और ये बॉटम तक, ये बॉटम तक जो आता है स्पीकिंग ट्री के साथ. तो अगर आप ये 3 4 महीने कर लेते हैं, राइट, तो यू विल सब्सटेंशियली इंप्रूवमेंट देखेंगे. ठीक है. या तो आपका वर्बल बचपन से अच्छा होना चाहिए, मतलब शुरू से अच्छा होना चाहिए, जैसे सिडिड है. सो ही वाज वेरी गुड एट वर्बल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही मैनेज्ड 100 percentile also. So let's go to Siddid and ask him. So Siddid, what was your strategy, and how you were able to nail 100 percentile in verbal? So as you mentioned, I have always been decent at verbal. So the important thing when I had started, attempting sectionals last year before my first attempt, so I saw there was a time constraint, so I wasn't able to finish all questions. So I usually used to leave 1 and a half RC in the beginning. But then I realized to maximize your score, you need to attempt all. So I started working on, trying to solve every RC faster. So I used to give 7 to 8 minutes per RC. So 7 to 8 minutes, so around 30 minutes, I used to aim was to complete all RCs within 30 minutes. Then I used to move on to para summary and fill in the blanks because the probability of getting those right are much higher than para jumbles and odd one out. Very good. So and also there is no negative marking in para jumbles and odd one out. So I think it's important to understand the pattern as well. So towards the end, I would do those last 4 questions, and I usually only, even in my real cat, I think all my mistakes were on that only. So
I got 15 out of 16 RC questions correct, and I left one, and I got the odd one out and para jumbles wrong. I got only one out of those 4 questions. So I think the probability of getting those right are very few. So it's better to, increase your speed and strength in RCs. Right, absolutely. So, 2, 3 things coming out of what Siddid has talked about. First thing is, if you are good at any subject, right? Uh, After 3, 4 mocks, you know that you are getting good percentile, right? So there, I always suggest, right, you start killing the examination. What does it mean? Start attempting it 100%, right? Only when you are already getting 99 plus in a particular section, right? So let us say in quantitative aptitude you are able to do 12 question, 13 question, then start thinking how you can attempt the whole paper. Same is with the verbal. If you are good at verbal, right, you try to see that if you are able to get 14 right, 15 right, 16 right, how you can get all 24 right, or at least how you can start attempting that. Because once you're good at the subject, hitting that clearly is very, very likable. For example, if you are a Kohli and you are batting very good, so you must take risk, right? But if you are in nervous 90s or you are not that comfortable with it, so then you should not take that much risk. The second thing that Siddid told, I want to rephrase that. In RC, the probability of getting all wrong is very low, right? Whereas in, if you do 2 para jumbles or 2 para summary or two this thing, there is a probability you will get all wrong because all are independent, right? But in RC, once you know that you don't know, you can very easily skip it, and you can make a sense after reading paragraph for 1 minute that यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, right? बड़े आराम से पता चल जाता है आपको. So my advice would be, all those who are not getting enough score in this thing, leave everything. 2 para summary questions, 2 RCs more than enough, because that will give you 2 RCs, 8 questions, 2 para summary, 10 questions. So what does it mean? 30 marks you are attempting. Even if you get 75% accuracy, you will have a 80-85% high, right? वर्बल में लोग मरते इसीलिए हैं क्योंकि वो ओवर अटेम्प्ट करके आते हैं, right? So thank you very much for this thing. Let's now go to back to um, um, Mohak, your quant was good, right? So what was the strategy, what strategies you adopted for quant boy? So quant में basically first you have to figure out कि which areas you are your strongest. अब जैसे my arithmetic was decent, so I focused कि जो अच्छा area उसको तो इतना अच्छा कर लो कि कोई भी क्वेश्चन है you don't leave it. So first of all, अब पेपर आता है, पेपर पे सबसे पहले आप ये सिर्फ अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया के क्वेश्चन है वो देख के वो जल्दी जल्दी सोल्व कर दो. एंड देन इन द सेकंड राउंड यू स्टार्ट लुकिंग कि जो क्वेश्चन, मतलब आपको पहले अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसमें साथ साथ में मार्क करते रहना कि जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा टाइम देख के पढ़ के समझ आ रहा है कि आप कर सकते हो या नहीं, सो दैट आप सेकंड राउंड Question में selection, right, absolutely. Question selection becomes a key role, once you are doing a examination like CAT, and specifically in quant, जहाँ पे आप सारे question नहीं कर सकते हो, right? It's very difficult to think of even doing all the question in quantitative aptitude, right? So now we have with us Anshul Rajput also. Anshul, you got 99.19, right? And welcome to the channel and welcome to this particular session. So which section was your strongest, Anshul? Thank you, sir, for giving the opportunity. Sir, my better section is actually quant, and I revised the quant through his user through or attended all the classes. I think I attend all the classes Yeah, in you the are the morning one is who attended all 5:30. the classes. I Yes, don't sir. remember I that think you, even if you have missed a single class. unfortunately Siddhi one and Mohak single will class, also agree to one that. or two, just I missed of that. But I attended all the classes of that. In morning, it's quite very difficult for me to, because my night schedule is to sleep at 12 or 1 a.m. actually in the night. But again, just awake at 5 a.m. and just prepare me for attending the classes of that one. So it's quite difficult for me. And one more thing, sir, I have to tell to everyone. In every class, till means 7 to 8 months, I didn't means uh,
put up the pen on the paper. Actually, I just revise all the concepts of that one. Your speed, I matched your frequency, your speed of that one, and your strategies, your videos. I didn't complete all the videos, but some videos I completed. And your the most important part is your means systematic questions. Means जो आपका pattern है and questions है, collections of questions. That is quite good, sir. It's most important to collect the questions and revise again and again of that. That is the Right. most important part, sir, of that. Good, good, And good. We second thing follow is, the sir, Alexa you learning system that helps people learn right from the yes, basic sir. till advanced thing, right? Till advance. And second thing is, sir, in the verbal section, actually, in all the passages, you also in the mocks especially, you provided in your mocks the GMAT passages mostly. I just observed of Right. that because I practice the GMAT passages. It helps a lot, helped me a lot of that one. Because So that is the the cat part, sir. is cat almost takes international source. Cat will never take an RC from an Indian source. Hardly we have seen one Yes, or two yes. RC coming once in a blue moon from the Hindu. Otherwise, most of the time articles are either from Eon or from Smithsonian, or they are from Encyclopedia Philosophy, or from the Nature, from the different sources, and sometimes from the books also, but again the foreign published books. New York Times is one of their favorite. So okay, we have a question coming in. Guys, can you give tips on the starting? I have started, should I proceed next? I am good with quants. Siddid, probably you would like to take the question and answer on this. Yeah, so starting में for verbal, I would suggest you just start reading. So if you are not comfortable with reading, I think if you start with reading, your speed will increase, and if your speed increases, obviously you will to attend more questions, but you'll start understanding passages better as well. So once you start understanding passages better, then you can obviously increase your score in verbal. And I think starting with reading is the most important thing. There won't be many complex words via RCMap, so they are not testing like if you understand the meaning of a long word or something, they won't ask you the meaning. You just have to be familiar enough कि when you see it in a passage, you understand what it means. Is it positive or negative? That's all. मतलब That's many words even I wouldn't know the meaning. So that's not the point. It's just being comfortable with reading and not getting tired. क्योंकि cat passages are very boring. I'll be very honest. मैं खुद बोर हो जाता था. And मतलब मैं starting में used to fall asleep after doing two RCs. So I started to trick myself कि मैं कुछ बहुत interesting पढ़ रहा हूँ. So I like football, so I used to imagine I'm reading something about football. So धीरे धीरे then my stamina increased and I managed to do well in verbal. DILR, now the issue with DILR in CAT in recent times is I would say it has become very unpredictable. So you can't really base your score on DILR anymore. So like DILR, I did, and the problem with DILR is if you mess up DILR, your quants also gets affected. मतलब मेरा वही है. So if I hadn't let DILR, I had a bad DILR section in the real CAT. If I hadn't let that affect my quant, I maybe would have been above 99.95 because I Yeah, would have done 3-4 more that's very, questions in very quant. important. The carry on fact, right? It impacts a lot, And if you are actually appearing mocks, the kind of mocks, we designed especially. So there we vary, difficulty level. Because cat क्या करता है ना यार, देखो 23 का DILR बहुत मुश्किल था, 24 का एकदम से इजी था, राइट, और 25 का अगेन बड़ा मुश्किल था. तो DILR को बेस नहीं लेते और आपको पता नहीं चलता DILR में कि यार आपका सेट निकल भी रहा है या आप ही का नहीं निकल रहा है. मतलब मेन प्रॉब्लम इस कई बार लगता है कि अब मेरा सेट नहीं निकल रहा, पूरी दुनिया का निकल रहा होगा. बट आई वुड से कोई भी सेक्शन है, खास करके वर्बल और DILR में, अगर आपका वो अच्छा नहीं जा रहा ना, तो समझो यार ये रिलेटिविटी का एग्जाम है. ये रिलेटिविटी का एग्जाम है. बार बार देखो, इस बार मैं आप खुद की बात बताता हूँ. क्वांट में आई वाज लाइक वेरी श्योर कि यार पिछले बार मैंने 18 और 17 क्वेश्चंस राइट किए थे, इस बार मैं 22 के 22 करके आने वाला हूँ. आई बेयरली अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन दिस टाइम, क्योंकि क्वांट इसमें लेयर्ड आया था, राइट. और थर्ड स्लॉट में तो माशाल्लाह मतलब अच्छे अच्छे बंदों का धुआं निकल गया. बट एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू मैनेज द परसेंटाइल. समझने की कोशिश करो. और जैसे सिडिड ने कहा, बहुत राइटली पॉइंट आउट किया,
कभी भी DILR तुम्हारा विनिंग स्ट्राइक नहीं हो सकता है. द विनिंग हैज टू कम आइदर फ्रॉम क्वांट और इट हैज टू कम फ्रॉम वर्बल. सो हमने सिडिड को सुना, हु गिव गुड अमाउंट ऑफ टिप्स ऑन वर्बल. नाउ मोहक, क्वांट के लिए क्या कहना चाहोगे यार? कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रोसीड करना चाहिए? सर क्वांट के लिए तो बेसिकली क्या है, आपको आई फील राउंड्स में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि सबसे पहले आप बेसिक्स हर टॉपिक के बेसिक्स से फेमिलियर हो जाओ. आपको बेसिक्स अच्छे से प्रॉपरली समझ आने चाहिए एंड हर बेसिक्स के ऊपर ही आपको 15, 20, 30 क्वेश्चंस हर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस आपको पहले कर लेनी चाहिए, सो दैट आप बेसिक्स तो आप लाइक सेकंड थॉट हो जाए बिल्कुल, कि आपको क्वेश्चन पढ़ती है आपको समझ आ जाए. एंड देन उसके बाद यू शुड गो डीपर इनटू द टॉपिक्स एंड देन बेसिकली प्रैक्टिस लिटिल कॉम्प्लेक्स लेयर्ड क्वेश्चंस. फिर बेसिकली जस्ट प्रैक्टिस. क्वांट्स में तो प्रैक्टिस ही काम आती है. एंड उसके बाद आपको क्या कहते हैं, सॉरी, मॉक्स करते टाइम आपको फिर उसमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है अपनी, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट क्वांट्स, यू स्टिल कांट सोल्व एवरी क्वेश्चन. यू कांट गो विद द माइंडसेट कि मैं हर क्वेश्चन करके आऊंगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, सारे क्वेश्चंस करूंगा. यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस वेरी स्किलफुली. राइट, सो वो गुड. आपकी स्किल तभी बनेगी जब आप इनफ मॉक्स प्रैक्टिस करोगे. Right. So we have one more question coming in. Maybe Anshul will answer this question. Guys, is it that the LRDI is always 2 sets, which any serious person who prepared seriously can solve that and remaining decide your percentile? ऐसा होता है कि 2 हमेशा हो ही जाते हैं? सर हो भी सकते हैं, क्योंकि मेरा DILR में ज़्यादा वो नहीं था, मेरा क्वांट और उसमें बेटर गया था. चलो DILR मैं is not the बताता हूँ. strongest part of from my side. I'll give you. I think I am the most qualified for to answer this question. दो लास्ट ईयर विपुल ने मेरे से ज्यादा स्कोर किया, बट इस साल मैंने उससे ज्यादा स्कोर कर दिया विपुल ने. एंड ही बीट मी दिस ईयर इन द ओवरऑल परसेंटाइल. लास्ट ईयर मेरा ओवरऑल विपुल से ज्यादा था. सो विपुल इज अ स्टूडेंट हु गॉट 99.99 इन DILR लास्ट ईयर. तो कहानी क्या है यार, देखो DILR में ना एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं 262 अप्रोच. ठीक है, अगर आपने ये 262 अप्रोच लगा ली ना, तो 2 सेट आपके कहीं नहीं गए. राइट. देखो ये बहुत ही अनलाइकली होगा कि चारों सेट गंदे होंगे. राइट, ये नहीं हो सकता. अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरा ही पेपर बर्बाद है. कभी नहीं हुआ है ऐसा. मतलब अगर मैं 23 वाला पेपर भी बात करूं, क्योंकि 25 वाला डिफिकल्ट था, बट 23 वाला सबसे डिफिकल्ट था, तो 23 वाले पेपर में भी 2 सेट, क्योंकि आई थिंक उसमें 5 सेट थे, 2 सेट उसमें, एक तो बहुत ही डुएबल था, एक थोड़ा सा करने वाला था. तो मतलब 1.5 सेट तो बड़े आराम से बन रहा था. अब आपको वो 1.5 सेट ढूंढना है. ठीक है, वो मिलता नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है. वो करना कैसे? हो सकता है वो पहला सेट हो, यू आर लकी, बट हो सकता है वो छुपा हुआ सेट हो जिसपे आप एंड में पहुंच रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, 2 मिनट लगाएंगे, सेट पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत ही फैमिलियरिटी है तो 6 मिनट और इन्वेस्ट करेंगे. बट अगर आपको 2 मिनट पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है यार ये तो मैंने 6 महीने तैयारी की, मैंने 40 मॉक दिए, मैंने दुनिया जहान का प्रीवियस ईयर किया, फिर भी ये वाला कॉन्टेक्स्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बाद में करूंगा. सिंपल. राइट. नई चीज है यार. देखो जैसे एवरेज टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन आया था कि AC का टेम्परेचर ऑफ कर दिया और वो धीरे धीरे कम हो रहा है. अब ये पहली बार देखा था मैंने, ऐसा कभी मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये वाला मैट्रिक्स नहीं समझ पाए थे, तो उस क्वेश्चन को बाद में किया. बट एक क्वेश्चन था जिसमें उसने सीधा सीधा परसेंटेजेस दिया हुआ है, बंदे दिए हुए हैं, उसका वेन डायग्राम बना के कर देना है. तो जो नोन टेरिटरी है उसको टाइम लगाना है, जो अननोन है उसको छोड़ते चलो. तो ऐसे 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 करके 2 मिनट 6 मिनट 8 मिनट के अंदर आपका सेट या तो सॉल्व होगा या 70% सॉल्व होगा, नहीं तो आप उसको छोड़ के आगे चलेंगे. देन नेक्स्ट सेट, देन नेक्स्ट सेट, देन नेक्स्ट सेट. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यार 15 मिनट बाद तुम्हारा कोई भी नहीं निकला, यही हुआ ना. बट एटलीस्ट 15 मिनट बाद तुम्हें पता तो चल गया कि कौन सा निकल सकता है. 25 मिनट लगाओ, 1-1.5 सेट निकाल लो, बन जाएगी बात. बट अगर आप पहला सेट लेके बैठे रहे ना, फिर भगवान बचाए भाई आपको, है ना. सो दैट्स हाउ थिंग्स गो ऑन, राइट. चलिए, सो बिफोर वी क्लोज, आई वुड आस्क ईच वन ऑफ यू टू टेल मी वन मिस्टेक ऑफ योर्स जो आपकी प्रिपरेशन में आपने किया, स्टार्टिंग विद अंशुल.
सर आपका मिनी कैट शो वाला जो था वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, मतलब मॉक्स मिनी मेरे कैट्स रह अच्छे गए से थे। नहीं लगा। ना ना नहीं किया, और कैट शो वाला था वो भी नहीं किया कैट शोज और मिनी कैट्स नहीं लगाए, कोई बात नहीं। ना, नहीं स्टिल यू मैनेज गुड परसेंटाइल, बट यस यू शुड हैव डन दैट। ठीक है, यू शुड हैव डन दैट बिकॉज यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग एल्स। ओके, मोहक। सर मिस्टेक आई फील मैंने कैट में मॉक्स दिए, बट एनालिसिस में आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम दे सकता था। मॉक्स मैंने इनफ मैं क्या दिए कहता हूँ, एनालाइज करना होता है, मैं क्या बोलता हूँ कि उसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। पहले तो रीसॉल्व करो साथ के साथ, हाँ, एंड देन तो ये उसके बाद रीसॉल्व नहीं करते हैं यार लोग। देखो बच्चा लोग, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मॉक देने के बाद ना रीसॉल्व करना होता है। बैठ जाओ उसको खोल के, और 6 घंटे लगते हैं उसमें। और अगर आपने 3-4 मॉक भी रीसॉल्व कर लिए ना यार, तो तुम देखोगे डिफरेंस आ रहा है। एनालाइज अच्छी बात है, बट पहले रीसॉल्व करना। चलिए ठीक है, सिडिड। मतलब मैं वुड से कि मेरा मतलब प्रिपरेशन में नहीं था, बट रादर स्ट्रैटेजी में था कि मैं अज्यूम करता था कि जैसे कि DILR दो मैं आराम से निकालूंगा, जैसे लाइक ही आस्क्ड लो कि आई इजीली बी एबल टू डू टू, एंड फिर देख लूंगा बिकॉज माय वर्बल इज स्ट्रांग, एंड क्वांट में देन आई पुल। बट रियल कैट में आई कुडंट इवन सॉल्व टू कंप्लीटली स्टार्ट में। सो आई वेंट थ्रू ऑल आई, क्योंकि आई हैड स्लॉट वन व्हिच आई थिंक वाज वेरी हार्ड DILR में. So I managed to do one set because that was data interpretation. Even that wasn't a straight graph, but वो हो गया. But after that, it felt like कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, because I had only done 3 questions एक set का, so that was only 9 marks, and I knew that I needed much more. So I managed to do मतलब दो question हर set से, then I did it like that. तो उससे मतलब cut off काफी आराम से clear हो गया. But I would say I hadn't prepared for such a scenario कि I wouldn't be able to solve 2 sets. So राइट। I think you should expect the unexpected because it can happen. And I would still say the paper was very weird this year, but whatever, it's the same for everyone. So Yeah. Right. So we have one more question. I have a CFA level 3 in August. Is it possible to juggle this and CAT 26 prep together? I think any one of you see CFA or any idea on that? Otherwise, I would like to answer that. so I had started level 1 साथ में, but I dropped the idea because I thought so I'm giving it now. I said I'll give it after my admissions and all. I mean, level 3, I would say, as far as I've heard from my friend, it's quite tough. So if you have a full-time job, I think it would be very difficult. But these two, I think you can manage. I mean, He's a CAT, if you full-time start student right now. also. Yeah, he is a full-time student, but he has to start early. So once you So if start you early, start next month, I think if you start by 15 March, you should be fine, because CAT, you need to give only 2 hours, I would say, in the beginning. So yeah, once you're done and CFA, you study for 3 hours. So I mean, you'll have to work hard for 6-7 months. But after CFA is done, you will see कि CAT हो चुका है, syllabus would be finished by then, and then you can do CAT for the last 3 months. yeah, mocks कर सकते हैं उसके बाद. Absolutely. चलिए, so before we close, guys, I would like each one of you to give tip one, स्ट्रॉन्ग तुम्हारे अंदर से जो निकल के आ रहा है कि यार ये करना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है, ये मेरा टिप है हमारे आने वाले बैचेस के लिए, यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए, कि ये भैया ये जरूर करना है. ठीक है, अंशुल आपसे लेते हैं सबसे पहले, वन पीस ऑफ एडवाइस. अकॉर्डिंग टू मी, यस सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस ज़्यादा रहें, रादर क्वेश्चंस की क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स से बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज क्लियर करें. करना जरूरी है. राइट, हाँ, एग्जैक्टली. कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं. अगर वीडियोस से कर रहे हैं कोई भी, उसमें जैसे आपके वीडियोस हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट्स पे फोकस ज़्यादा करें. अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ कर रहे हैं और क्वेश्चंस आप 50 लगा रहे हैं, दैट्स ओके. पर ये नहीं कि कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, आप 300 400 500 बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगे. राइट, राइट. सो उससे कॉन्सेप्ट्स कोई विंस ओवर बेनिफिट नहीं होगा. क्वेश्चन. गुड, हाँ, गुड. क्योंकि मैंने जो देखा है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट से ही आप विन कर सकते हैं, प्रैक्टिस से इतना नहीं होगा. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे वहाँ पे. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा कम प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा. हाँ, क्योंकि मैंने सर क्वांट में देखा है, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे मिक्सचर के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का आता है, और कुछ ज्योमेट्री क्वेश्चंस है. जैसे जेड की बात करें, जेड में भी इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चन से आते हैं. तो अगर वो आ रहे हैं तो मतलब कंसेप्ट से आप जीत जाओगे, विन कर जाओगे. कंसेप्ट नहीं है क्लियर तो खाली प्रैक्टिस से नहीं होगा. राइट, राइट, राइट. और सेम चीज़ आरसी में है, वर्बल में भी कंसेप्ट है आपका, कैसे पैसेज को
मतलब पढ़ना ये नहीं कि आप 200-250 पैसेज आपने लगाए हुए हैं, कंसेप्ट नहीं है कि आप कैसे उसमें से हमें कैच करने हैं पॉइंट्स, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑथर का व्यू पॉइंट कैसे देखना है, क्रिटिकल चेंज पॉइंट्स कैसे देखने हाँ, हैं, दैट उसमें क्योंकि उसमें थोड़ा आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है कि आपको कैच कैसे करना है पॉइंट। राइट। गुड, थैंक यू अंशुल, थैंक यू वेरी मच। मोहक, ओके सर, मेरे पास एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नो मैटर कि आपको अगले साल कैट देना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देना है या इसी साल देना है, स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज रीडिंग की हैबिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बिकॉज उसमें आपको स्पीड भी चाहिए एंड विद दैट कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, सो वो हैबिट से ही आएगी। यू नीड टू बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड उसके साथ साथ यू ऑल्सो डोंट, इट ऑल्सो शुडंट बी कि यू गेट टायर्ड वेरी अर्ली बाय रीडिंग, बिकॉज आपको 4 पैसेज पढ़ने हैं, उसके बाद अलग से और क्वेश्चंस भी करने हैं। सो हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक सर थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स एडवाइस है कि if you're not a very bright student or not very good at quants and all, and you have only 2-3 months to prepare for these exams, so I would say prepare for cat, but usko ek baar back seat pe rakho, focus on nmat and snap more, because I feel nmims in today's time is one of the easiest MBA colleges to get into, which comes under top 20 list in India. right. If you prepare, It's a very user friendly exam, I always say. Nmat and right, Snap are user friendly, right? right, exactly. Don't make you feel bad after the examination or after the result. यस सर। एंड सर अब जैसे स्नैप है, इसके तो आपको मॉक्स प्रैक्टिस करना भी इजी है, बिकॉज 1 घंटे का मॉक होता है। हाँ, यू कैन गिव 3-4 मॉक्स इन 1 डे एंड देन एनालाइज ऑल्सो, उसमें टाइम भी कम लगता है। right, सो right. आई Siddid, good. Thank you very much, Mohak. So my tip wouldn't be regarding prep. I would say कि mostly you have to stay positive throughout the process. And if you are aiming, always target as high as you can. So if you're aiming, don't aim for 99, because if you aim for 99 तो 99 नहीं आएगा. If you aim for 100 तब शायद 99 आ जाए. And anything above 99.5, then I would say it comes down to a bit of luck as well above that level. But I think you have to stay positive, and if you score less, mocks or PYQs, I mean, don't be disheartened. Just continue working dhire dhire. You will see the score rising up. Right. Consistency is the key. That's what comes from him. So thank you very much everyone for joining, and we have a last question. 99 section के लिए कितना चाहिए? क्वांट में तो यार 99 के लिए 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे. DILR में 2.5 sets are more than enough. In verbal, maybe I think 30 marks. 40. This year it was at 40. 40 99. marks. 40 marks for 99 percentile would be required. वर्बल में क्योंकि स्कोरिंग होता है तो वर्बल लोग ज्यादा करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो वर्बल में कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है 99 के लिए. बट you don't target 99 in each section. That is like not a realistic thing. You try to see one section where you will score 98, 99, 95. One section which is your second week, there you try to touch 95. And the third section which is your weakest, so aim for 85, 90. You cannot say you will score 99, 99, 99 in all three. For most of people, nothing like it if you can do that. Anyhow, thank you very much, Anshul, Mohak, and Siddid, and wish you all the very best for your future and your interviews and MBA journey ahead. And thanks for coming here live and helping our viewers, students to learn from your experience. All the best. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Okay, bye-bye everyone.